Same thing, the exact same thing I'll do right now. Okay, I'll be taking values. Okay, and x अगर 4 से बड़ा लिया तो क्या हो जाएगा, सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव. यू कैन ऑब्जर्व, सपोज 5 लिया तो ये हो जाएगा 3, 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10. प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, राइट. आई एम सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 5 एंड चेकिंग कि बेसिकली साइन क्या है इस एक्सप्रेशन का. Okay, so when I substitute x equal to 5 and check the sign of the expression, it's positive. Between 2 and 4, let's take the value 3 in this case and check. अगर हम x equal to 3 put करते हैं तो वैल्यू क्या आती है. So 3 minus 2 is 1, 3 plus 2 is 4, 3 minus 4 is minus 1, into 3 plus 5 is 8. Negative into 3 positive terms, right? Okay, the product will be negative. So 2 to 4 के बीच I can say the graph is negative, right? Okay guys, same thing you can observe for minus 1 and 2 also in this case. If you take any number between minus 1 and 2, 0 for simplicity, ये होगा minus 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा minus 4, ये हो जाएगा 5, minus minus हो गया plus. So any value between minus 1 to 2, the graph will be positive, right? And same thing you can do for minus 5 to minus 4. Take minus 3, तो ये हो गया minus 5, ये हो गया minus 2, ये हो गया minus 7 और ये हो गया 2. When you multiply, the product is negative. And any value beyond minus 5, let's take minus 6, ये हो गया minus 8, ये हो गया minus 5, ये हो गया minus 10, ये हो गया minus 2. All negative numbers multiplying will make it positive, right? So this should be the nature of the graph. Okay, let's solve this question, guys. Find the number of positive integral solutions for x minus 111 raised to 111, x minus 114 raised to 114, x minus 117 raised to 117, and x minus 120 raised to 120 less than equal to 0. So we want to find out कि ये expression जो है, ये expression कहाँ पे less than equal to 0 होता है. Okay, so first step is we take the roots. Roots कौन सी होंगी यहाँ पे. expression 0 कब होगा, when x is equal to 111 or 114 or 117 or 120. Guys, first step is we plot these roots. Okay, now by the method we saw just now, guys, 120 की beyond तो expression positive ही होगी, right? 120 की power कितनी यहाँ पे 120 है, guys, right? Okay, so there'll be no sign change, plus का plus ही रहेगा, right? 117 पे power क्या है 117, it's an odd power, there is sign change, negative हो जाएगा. Again 114 पे power क्या है 114, okay, positive, even, there is no sign change. And 111 पे power is odd, so there will be definitely sign change. Okay, अब guys, the expression to be less than equal to 0 के लिए पहली बात तो हमें 111 के लेफ्ट साइड में और 117 के राइट साइड के रीजन कंसीडर नहीं करना है, राइट? बिकॉज हियर द एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, राइट? ये एक्सप्रेशन नेगेटिव कहां पे हो रहा है गाइस? ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो रहा है 111 से लेकर 114 तक और 114 से लेकर तो 117 तक, राइट? सो 111 होगा एक सोल्यूशन, 112 होगा, 113 होगा, ओके, 114 भी होगा बिकॉज यहाँ पे ग्राफ का वैल्यू 0 हो ही रहा है, राइट? लेस देन इक्वल टू 0 बोला है, राइट? सो वी आल्सो हैव टू इंक्लूड 114. then 115 होगा, 116 होगा, 117 होगा, राइट? सो 1 2 3 4 5 6 7, the answer is 7. no, ये वाला भी वैल्यू इंक्लूड होगा गाइस, राइट? because although the graph is not less than 0 here, यहाँ पे the graph is becoming 0, right? so यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड होगी 120. so the particular expression has not 7, it has exactly 8 possible solutions for negative integral solutions, non-negative integral solutions.